हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं SMG डेंट। तो दोस्तों, आज की वीडियो किस टॉपिक पे बनने वाली है ये तो आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज टोयोटा कंपनी की Etios कार की, जो एक्सीडेंटली कार है, आप देख ही चुके हैं। दोस्तों, अगर हम इस टोयोटा कंपनी कार की अगर बात करें तो इसकी जो बॉडी होती है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इस कार की जो एक्सीडेंटली है ये रोड से उड़कर सीधे खेती पर गिर के पलटी हो चुकी थी। जो इसकी टायर है वो आप देख ही चुके हैं, चारों टायर ऊपर की थी, बट इसकी जो बॉडी है काफ़ी मेजर एक्सीडेंट नहीं है। तो इसकी जो बॉडी की हम डेंट है इसे आज हम आपको दिखाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पे हमारे साथ बने रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर इसकी डेंट की बात करें तो इसकी जो डेंट है ये दोनों पैनल पे ही, रियर पैनल जो है ये आप देख सकते हैं, इसकी पैनल पे ही ज़्यादा डेंट है। बाकी जो इसकी एक रियर डोर है उसे तो हम चेंज करने वाले हैं। तो इसे डेंट करने के लिए इसकी पहले हमें जितने पार्ट्स है पूरे इसे हमें खोलने होंगे। तो चलिए इसे पहले खोल लेते हैं। फाइनली हम इसकी जो पार्ट्स है इसे हम खोल चुके हैं और इस कार को अब देख सकते हैं, कार पूरी तरह से नेकेड हो चुकी है। तो इसकी जो डेंट की काम है अब हम इससे कर सकते हैं। तो चलिए इसकी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं।
दोस्तों फाइनली इसकी डेंट की काम पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है ये पेंटिंग पे जाएगी और पेंटिंग की जो प्रोसेस है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, बट उससे नेक्स्ट वीडियो पे हम आपको दिखाएंगे। और डेंट की अगर बात करें तो डेंट की जो प्रोसेस थी 10 से 15 दिन की पूरी प्रोसेस थी इसकी। हम 10-15 दिन में इसको पूरी रेडी किए हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।